Welcome to a video lecture. In this lecture, we are going to first look at some physical quantities and the conventions and standards for these physical quantities. And then later on, we'll apply these conventions to answer exam questions. Let's get started. These right here are the tables for base physical quantities and then for derived physical quantities. Derived physical quantities are basically the physical quantities which are the combination of two or more base physical quantities, right? So first of all, we have seven base physical quantities. We have length that is represented with L. It is measured in meters and the SI unit for meter is small m. Why do we mention small or capital? Because the symbols of the units and the symbols of physical quantities as well are case sensitive. Like if they say that you have to mention small m whenever you are to mention meter, it means कि कहीं पर आप अगर capital M से mention करेंगे तो it is going to make a difference, right? Then we have mass as the base physical quantity. It is represented with small m, measured in kilograms, and the symbol for kilogram is kg. Then we have time represented with small t usually, लेकिन जब खास तौर पे time period की बात करते हैं तो be represented with capital T as well. It is measured in seconds. See, when we say time is measured in second, that does not mean that we are denying that minute or hour or day, they are not the unit of time. No, they are still the units of time. But if you talk about the standard unit of time, then the second is the standard unit of time, right? And the symbol we use to represent the second is this small s. Then we have temperature represented with capital T, measured in Kelvin. Again, Celsius and Fahrenheit are the units of temperature as well, but the standard unit is Kelvin. And the symbol which we use to represent this Kelvin is capital K. Then capital I to represent current. Current is measured in amperes and this capital A to represent ampere. Then amount of substance is measured in moles to represent mole. We use MOL, again small case. Then we have intensity of light, which is sometimes represented as luminous intensity of light. It is represented with again capital I, measured in candela, and the symbol to represent candela is capital C with this small d. Then these are the base physical quantities. Then इसके अलावा जितनी भी physical quantities हैं, they are all derived physical quantities. They somehow are made up of more than one physical quantities, right? Let's just see. First of all, we have area. We represent it with capital A. How do we say कि this area is the derived physical quantity? उसका formula लिखें, then go to the unit or the dimension of this physical quantity, and then the unit itself will let you know that it is a derived physical quantity. How so? Area is the product of two lengths, right? It is length into width. We measure length in meters, we measure width in meters. इसका मतलब है unit of area should be meters into meters, right? We have length in meters and then we have width in meter. Their product is meters square. So the unit of area is meter square. See, meter itself is the base physical unit, right? And meter square. Whenever we use one physical unit multiple times or we use multiple physical units at a time, we say कि जिस भी quantity का अब ये unit है, it is the derived physical quantity. Then next we have volume. Again, volume is the product of three lengths. We have length into width into height. All three of them are measured in meters because they are kind of lengths, right? When we multiply them, the unit of volume is cubic meters, right? Any three times the base physical quantity ka unit, which is meters. So this volume is the derived physical quantity. Then density, it is mass per unit volume. Mass is measured in kilograms, volume in cubic meter. क्योंकि density is the ratio of these two, तो density का unit क्या होना चाहिए? The ratio of unit of these two, right? Again, kilogram is a basic physical quantity and उसका unit, right? And this meter is also the unit of a base physical quantity. Again, इनके combination से मिलकर बनती है density. So density is a physical quantity, but not the basic one, the derived physical quantity. Then we have velocity.
Velocity is distance per unit time. Distance is measured in meters, time is measured in second. So velocity ka unit is the ratio of unit of these two physical quantities. Again, more than one basic physical quantities के units are there. तो हम कहेंगे velocity is a derived physical quantity. Likewise, we have acceleration, velocity per unit time. Velocity is meters per second, another second in the denominator. For this time, it makes meters per second square. More than one physical quantity के units, ठीक है? We have meter and then we have second. It is a derived physical quantity. Like you can just label a physical quantity as basic or derived just by looking at the unit. Likewise, we have work as well. Work is the product of force and displacement. Force is a physical quantity जिसको we usually represent in the unit of newtons, right? And newtons को हम kilogram into meters per second square भी लिखते हैं. How so? Because force is the product of mass and acceleration. Mass is measured in kilograms, acceleration is measured in meters per second square. So we can always write force as kilogram into meters per second square. So force के लिए we just wrote kilogram into meters per second square. Then displacement is a kind of distance which is measured in meters. Let's just simplify it. We get kilogram into meter square because same bases multiply, powers gets added. And denominator may we have the second square, right? Kilogram is mass ka unit. Mass is a base physical quantity. Meter is the unit for length. Length is a base physical quantity. Second is the unit for time. Time is a base physical quantity. So work ka unit is altogether the combination of more than one base physical quantities ka units. Therefore, we say this work is a derived physical quantity. Also, just so you know, we have two more physical quantities which neither fall in base nor in derived physical quantity. They are called supplementary physical quantities, right? We have a 2D angle, which is measured in radians, and then we have 3D angle, which by the way is also known as solid angle, which is measured in steradians, right? Then here comes these prefixes, right? Why do we actually use prefixes? For suppose I have 10,000. Let's just call it is 10,000 meters, right? Should I always be writing it 10,000? या अगर ये इससे कोई greater value भी होती, right? Let's just take as many zeros as we can. ठीक? Should I always be writing it this way? Yeah, is there any other way I can make it look more presentable? कोई इस तरह की form कि just by looking at the number, I can have an idea as to exactly how big or how small the number is to make the physical quantities, to make the numerical values जो बहुत छोटी या जो बहुत बड़ी होती हैं presentable, we use these prefixes, right? उसके लिए first of all we should have an idea of multiple prefixes. उनको हम किस standard form में लिखते हैं, उनका symbol क्या होता है and what do they actually represent, right? जैसे we will use kilo, which is represented by K. It is nothing but 10 raised to the power 3, which again is 1000, right? For suppose अगर मेरे पास है 5000 meters, right? Distance. I can always write it to be 5 into 10 raised to the power 3 meters, and then this 5 into 10 raised to the power 3, right? 5 as it is, 10 raised to the power 3 को I can simply replace with kilo and then this meters as well, right? और फिर हम इसको usually directly लिख लेते हैं, it is 5 kilometers. Same here. अगर यहाँ पर ये 6 zeros होते तो I would have written it as 5 into 10 raised to the power 6, and we know that 10 raised to the power 6 is nothing but mega, which is represented with capital M, and I would have written it as 5 mega. अगर distance होता और आगे meters होता तो I would have directly represented it this way. ठीक, तो इसी तरह अगर कोई वैल्यू बहुत स्मॉलर है उसको भी रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए we use these prefixes as well, right? We have kilo, mega, giga, tera. इसके अलावा we have peta, exa, and so on, but these are the frequently used ones. Then we have deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, etto, and again many more. Let's just see if we have 0.005
meters, right? Should I always be writing it this way? No. There is another way of writing this using prefixes as well. मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 1 2 3 3 digits point को move करवाया, मैं इसे लिख दूंगी 5 into 10 raised to the power minus 3 meters. Then this 10 raised to the power minus 3 is nothing but milli, and I represent this milli with small m. See, so we can write it as, इसकी जगह लिख देते हैं milli, this unit as well, and then we have a 5 here. So all in all, I can write this 0.005 meters as 5 millimeters. Same applies for higher and smaller orders of values. We can always make them presentable by just using prefixes. But then again, when we use prefixes, there are some standard rules and conventions that we must follow while using these prefixes. Let's just see. First of all, what are significant figures and what are the rules for significant figures, right? Significant figures are accurately known digits and the first doubtful digit in your number. There are some predefined rules for significant figures. Let's just see what they are. Maths में, if I ask you to divide the numbers, कैसे लिख सकते हैं? The very basic classification would be, we have known zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and then we have zeros, right? पहले इसके basis पे significant figures के rules बनाते हैं. Whenever we have known zeros, we'll always take them as significant figures. Significant figures में we are going to count them. But when it comes to zeros, zeros के लिए we further classify them into the placement of zeros. Is the zero in between the non-significant, in between the non-zeros? Let's just write zero in between. Is the zero at extreme right or extreme left? Extreme left, and then we have extreme right. The rule says whenever we have zero in between known zeros, we'll always take it as significant figure. When we have zero at the extreme left of a number, we'll always take it as insignificant figure. But when it comes to zero at the extreme right, we further classify it because it might be significant and it might not be significant figure, depending on if the number is a decimal number or is it an integer. If the number is a decimal, we'll take this zero at the extreme right to be significant figure. But if the number is an integer, we might count the zero as significant or as insignificant again. This now depends on the least count of your instrument, right? This depends on least count of the instrument. ठीक, these are the basic rules. Let's just take an example or two and see how can we actually use these rules to specify if a digit in a combination of number is significant or not. Let's just take कोई भी random सा number. Let's just take 28203.4290, right? अब देखते हैं. How many significant figures are there in this value? 8, 2, 3, 4, 2, 9. These six are known zeros, right? And the rule says known zeros will always be significant figures. So far we have six significant figures. Then let's just see zeros के बारे में क्या है. This zero is in between these two known zeros, right? And the rule says that whenever you have a zero in between known zeros, you'll always count this zero as significant figure. So this zero is also significant. This makes total of 7 significant figures. How about this zero at the extreme right? We'll say, okay, this is a zero at the extreme right. So extreme right पे तो zero significant भी हो सकता है or insignificant भी हो सकता है, depending on if the number is decimal or integer. Do you see this decimal point right here? Yes, you do, right? तो क्योंकि it is a decimal number और decimal में जब भी zero extreme right पर होता है, we take it as significant, right? So all in all, we have total of 8 significant figures in this number. Let's just take another example. Let's just take another example. For suppose we have a number 0.
0060032. Let's take 3 more zeros at the end, right? कोई ऐसा नंबर लेना जिसपे मल्टीपल रूल्स एक साथ अप्लाई कर सके. नाउ अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दे दिया एंड दे आस्क यू कि बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ डू वी गो अबाउट इट? नॉन जीरोस देखने 6 3 2, these three are known zeros, तो ये तीनों तो significant figures हैं, right? Then how about these two zeros? These two zeros are in between two known zeros, and we know that whenever we have zeros in between known zeros, we take them to be significant. तो ये दोनों significant count होंगे. Okay, what else do we have? We have these three zeros here, right? These three zeros are at the extreme left. और हमें पता है whenever we have zeros at the extreme left, we always take them to be insignificant. तो हम इनको नहीं count करने वाले. Now, last we have these three zeros here. Whenever we have zeros at the extreme right, here we look for if the number is decimal or integer, because these zeros might be significant and might not be significant, ठीक है, depending on decimal है या integer. तो क्योंकि this was a decimal number और हमें पता है whenever we have decimal to extreme right के zeros will be considered significant. So all three will be considered significant figures. See, we have total of 8 significant figures in this combination, right? Um, let's just take another example जो decimal ना उसके अलावा कोई value. For suppose we have 8000200. ठीक है? Now, how many significant figures are there? 8 and 2. These are two known zeros. So they have to be significant following this rule. How about these two zeros? They are in between two known zeros, 8 and 2. So they are significant as well. So far we have 4 significant figures. How about these two zeros at the extreme right? Whenever we have zeros at extreme right, they might and might not be significant. अब देख लेते हैं, क्या ये मेरा नंबर डेसिमल है? नो, इट इज नॉट, इट इज एन इंटीजर, राइट? और इंटीजर के केस में हमने कहा था इट डिपेंड्स कि आपके इंस्ट्रूमेंट का जिससे भी ये रीडिंग ली गई है उसका लीस्ट काउंट क्या है. In these type of questions, the examiner will of course provide you with the additional information कि ये रीडिंग जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उसका लीस्ट काउंट क्या है. अगर ऐसे किसी केस में वो आपसे कहते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज 1, इसका मतलब है यहाँ पर 1 भी हो सकता था, 202 203 कुछ भी हो सकता था, इसका मतलब है एक्यूरेट डिजिट होता है एंड वाला. सो विल टेक दिस सिग्निफिकेंट और फिर ये भी सिग्निफिकेंट काउंट हो जाता और हम कहते हैं वी हैव 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर अगर लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 1. और अगर यही सेम वैल्यू मेरे पास होती और वो कहते कि इट हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विद द लीस्ट काउंट ऑफ 10, यानी वो या तो मुझे बताता इट इज 200 या फिर वो बताता इट इज 210 220 230, यानी द इंस्ट्रूमेंट would not have been able to differentiate ये वाला डिजिट कब चेंज हो रहा है. तो हम कहते हैं दिस इज डाउटफुल. उस केस में हम कहते हैं दिस जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट बट दिस वुड बी सिग्निफिकेंट, राइट? एंड वी विल से 10 के लीस्ट काउंट की कंडीशन में इसी सेम वैल्यू में देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और अगर वो कहते हैं कि यही सेम वैल्यू किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से दी गई है जिसका लीस्ट काउंट वाज 100, तो फिर हम कहते हैं ये दोनों will be considered insignificant because या तो वो बताएगा इधर 200 है या 300 है या 400 है, right? The instrument is unable to differentiate कब 210 आ रहा है, कब 220 30 कब आ रहा है, right? It would just mention कि 200 है या 300 है. So हम कहेंगे कि दोनों doubtful है, they are insignificant, right? So उस केस में we'll just say कि 1 2 3 4. Okay, it has to be 100. Least count के केस में we'll say कि 4 significant figures are there in the same value. और डेसिमल प्लेसेस तो हमें ऑलरेडी पता है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखे हमें वी टेक देम एज डेसिमल प्लेसेस, राइट? वी हैव अ रूल, अ स्टैंडर्ड दैट इज सेट टू डिफाइन कि अगर आपने कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को लेकर फाइनल कोई भी आंसर लिखा है, देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ राइटिंग योर फाइनल आंसर, राइट? वो क्या है? उसके लिए द रूल इज whenever you multiply or divide कोई भी numerical value and then you get to the final answer, तो फिर ऐसे केस में आपने अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है टू appropriate number of significant figures. और वो क्या होने चाहिए? लीस्ट significant figures in your raw data, right? ऐसे ही जब भी आपकी
अपनी कोई भी वैल्यूज हैं आपके पास वेरिएबल्स, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर आप फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं, उस केस में you'll have to take care of the decimal places. You'll round off your answer to least decimal places used in your values. Let's just see. For suppose we have two values. Let's just take two random values. Let's say we have A, which is 2.2, and we have B, which is 3.3. ठीक है? The very first step is पहले देख लेते हैं इनमें कितनी decimal places हैं और इसमें कितने significant figures हैं. When we look at A, we have 2, 2, 2. All three of them are non-zero. और अभी तो हम देख कर गए ना, non-zeros will always be taken as significant. So it has total of three significant figures. How about the decimal places? Point के बाद कितनी values हैं? We have two values. It has two decimal places. What about this B? B में we have 3 and 3 being non-zero. It has two significant figures. How about the decimal places? Point के बाद we have one value, right? We'll say it has one decimal place. Now, the rule says if you are to calculate A divided by B, right? आपने इस A और B को divide करना है, right? So we'll get 2.22 over 3.3. What would be the final answer? Your final answer would be 0.6727 and so on. ठीक है, जनरली जब हम डिवाइड करते हैं हम ये देखते हैं, बट द रूल सेज कि आपने अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है तब तक जब तक आपकी वैल्यू में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ना आ जाए. लीस्ट कितने? ए में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बी में 2 हैं, इन दोनों में से कम कौन से हैं? 2. इसका मतलब है मैं जब इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगी तो मुझे अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है जब तक उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, राइट? 2 को हटा देना है. देन अगर इन्हीं ए और बी को हमने ऐड करना है, right? We are to add 2.22 and 3.3. Just put these values in your calculator and you'll get 5.52. How many significant figures are there? 5, 5 and 2, all three being non-zeros. So we have total of 3 significant figures here. How many decimal places? 5 and 2. 2 decimal places and 3 significant figures. Should it be the final answer? I'm not saying it is incorrect. Lekin if you are to write your final answer, taking care of the appropriate rule for writing your answer, फिर आपको देखना पड़ेगा. Whenever we are adding or subtracting two values, फिर हम अपने final answer को लिखते हैं इस तरह कि उसमें least decimal places हो उन values के हिसाब से जो हमने यूज किया. हमने इन दोनों को add और subtract किया. It has two decimal places. It has one. इसका मतलब है दोनों में से लीस्ट वन सा. ऑफ कोर्स दिस वन. तो मुझे अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है इस तरह के पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू लिखी. अभी कितनी है? 2. तो मुझे किसी तरह इस एक को हटाना है, राइट? यहाँ पर आई जस्ट क्रॉस्ड ये वाला एडिशनल 2 एंड ये वाला एडिशनल 2 7, बट एक्चुअली वी डोंट डू दिस. यू कैन नॉट जस्ट कैंसिल दी वैल्यूज जो आपको अपने फाइनल आंसर में नहीं चाहिए. हम इनको ऑफ कोर्स वैनिश करवाते हैं अपने आंसर से, लेकिन अगेन फॉलोइंग स्पेशल सेट ऑफ रूल्स which is for rounding off a number. Round off के लिए there are just 3 statements. It says whenever your number, let's just call it n, that is to be vanished, it is greater than 5, it will vanish, lekin it will add 1 to the last number, right? If the number is smaller than 5, it would just vanish without adding anything to the previous number, that is with adding 0. Lekin if the number that is to be vanished is 5, तो फिर you'll have to be more careful and you'll have to see कि उस vanish होने वाले number से जो पिछला digit है वो कौन सा है. If the digit is even, this 5 would just vanish without adding anything. But if the digit is odd, then this 5 would add 1 into this, right? This might sound confusing, but let's just take 1 or 2 examples to see how it works. For suppose, बल्कि कोई additional example क्यों लें, अपना पिछला वाला ही ले लेते हैं. It says 0.6727. We had 0.6727 and we decided कि rules के मुताबिक मुझे मेरे इस final answer में अभी कितने total of 4 significant figures है, मुझे इसे round off करना है कि इसमें total 2 significant figures आ जाए, right? तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 चाहिए, बाकी इन 2 को मैंने किसी तरह vanish करवा देना है. Starting with the extreme right, we have this 7 here, right? Is the 7 greater than 5?
Yes, it is. What do we do with a number which is greater than 5? It vanishes और पिछले वाले में 1 ऐड करवा जाता है. So next step क्या होगा? This 7 will no longer be here, लेकिन ये इस पिछले वाले 2 में 1 ऐड करवाएगा and it will make it 3. This becomes 0.673. Still, this number has 3 significant figures, right? We were to round it off till we get 2 significant figures. इसका मतलब है मुझे अभी फिर इस 3 को भी वैनिश करवाना है. Again, this 3 being a number which is smaller than 5, it would just get vanished. पिछले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? We'll just round it off as 0.67. Clear? कोई ऐसी एग्जांपल लेकर देखते हैं जिसमें 7 आ रहा हो. Let's just take 5.327541. चलें आगे. Let's just take 7 as well. इसको देखते हैं, right? We have this 7. 7 is greater than 5. पिछले वाले में एक ऐड कर जाएगा. Clear? This 1 becomes 2 और 7 vanish हो गया. 2 smaller than 5 vanish हो जाएगा. 4 smaller than 5 vanish हो जाएगा. Then we have a 5 here. और 5 के केस में हमने देखा था. फिर हम देखते हैं कि जो उससे पिछला वाला नंबर है वो even है या फिर odd है, right? अगर odd है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा. अगर even है तो वो as it is रहेगा, बस वो 5 vanish हो जाएगा. ठीक? Here we have 5 से पहले 7. 7 is an odd number. तो 5 के vanish होने पर इसमें 1 ऐड हो जाएगा and the 7 becomes 8. Clear? अगर अब इस 8 को भी वैनिश करवाना हम चाहें तो क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 5 तो फिर ऑफ कोर्स ये पिछले वाले में 1 ऐड करेगा. दिस 2 becomes 3. इसी तरह दिस 3 इज स्मॉलर देन 5 सिर्फ वैनिश हो जाएगा एंड so on. Then we have scientific notation. What is scientific notation? It is a standard form of writing a number. Why did we even need it? Let's just take an example. Let's just take कोई भी random number 200, right? In how many ways I can write this 200? I can write it to be 20 into 10 raised to the power 1, right? I can write it to be 2 10 raised to the power 2. I can write it to be 0.2 10 raised to the power 3. I can write it to be 0.2 10 raised to the power 4, and I can keep on increasing this power, right? While shifting this decimal to the left. By the way, it has to be another 0 here, right? फिर इसको मैं और भी लिख सकती हूँ. I can write it to be 2000 10 raised to the power -1. ठीक? 20,000 power -2 and then again so on. ठीक? There are so many ways I can represent the same number in. ठीक? क्या इसमें से कोई गलत है? No. All of them are correct. बिल्कुल इसी तरह जैसे भी सेड टाइम को वी मेजर इन सेकंड बट क्या मिनट आवर और डेज टाइम की यूनिट नहीं है यस दे आर बट विद सो मेनी ऑप्शंस अराउंड वी डिसाइडेड टू मेक a standard और उसमें हमने कहा कि ठीक है टाइम के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास बट सेकंड इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम ऐसे ही डिस्टेंस के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं right we have miles we have meters and so on but we decided कि अच्छा meter is going to be the standard unit likewise we said there are so many ways you can represent a number in लेकिन let's just decide a standard form of writing a number right और उसका criteria क्या है you just write one number then you place decimal point and उसके बाद value and then 10 raised to the power something ठीक उसको follow करते हुए मुझे कैसे लिखना है I am going to write it as इस 200 को starting is 2 I will write 2 but इस 2 के बाद I am to place point इस 200 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2.00 10 raised to the power 2 right because अगर मैं decimal को यहाँ से 2 digits left की तरफ लेकर आई हूँ जब हम left की तरफ लेकर आते हैं तो power positive में increase होती जाती है और जब हम decimal को right की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो power negatives में increase होती जाती है right so how do we write it 2 digits लेफ्ट की तरफ लेकर आई हूँ मैं डेसिमल पॉइंट को so I am going to write 10 raised to the power plus 2 with this 0 right here this is the standard form of writing this 200 right again I am not denying that this is wrong or this is wrong or this is incorrect all of them are correct but the standard form of writing this 200 is this one we have 10 which one number जो point से पहले होना चाहिए और इसके लिए हमारे पास condition क्या है it should be greater than 0 and it should be smaller than 10
10 से स्मॉलर और 0 से ग्रेटर, यानी 1 till 9 कोई भी नंबर यहाँ पर होना चाहिए, देन पॉइंट एंड देन उसके बाद कोई भी वैल्यू एंड देन 10 raised to the power, कोई ऐसी पावर which represents your number, right? Let's just take an example. We have 1876. How do we write it? First of all, किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है उसके एंड में पॉइंट है. Let's just place a point here, right? And then a zero here. अभी कोई भी पावर नहीं है इसकी, so we can write it 10 raised to the power 0 because anything raised to the power 0 makes 1 and 1 multiplied by any number does not makes any change to that number, right? इसका मतलब है it is still 1876, बस उसको लिखने का एक अलग तरीका है. ठीक है. Now let's just start moving this point to the left. एक डिजिट लेफ्ट पर लेकर आए, it becomes 187.6. आगे चाहें तो इस जीरो को कॉपी कर दें, 10 raised to the power 1. ठीक, आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, your power will keep on increasing with positive. Then क्या this 187 is smaller than 10? No, it is not. फिर शिफ्ट करें पॉइंट को, you'll write 18.760, 10 raised to the power 2. Is this 18 greater than 0? Yes, it is. Is it smaller than 10? No, it is not. इसका मतलब है अभी भी इसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत है. फिर इस पॉइंट को मूव करवाएं. This becomes 1.8760, 10 raised to the power 3. Is this one greater than 0? Yes, it is. Is it smaller than 10? Yes, it is. So this is the standard form of writing this number. Again, I'm not saying this is incorrect or this is incorrect. चारों सही है, but the standard form of writing this number or the scientific notation for this number has to be this one. Okay, and if I ask you कि बताएं इसके अंदर कितने significant figures हैं, so आप कहेंगे there's 1, 8, 7, 6. These are known zeros. So they are significant. चार तो ये हो गए. Then we have the zero at the right. जब भी extreme right पे zero होता है तो फिर हम देखते हैं हमारा number decimal था या integer था, right? Do you see this decimal point right here? Yes, you do. और decimal के case में हम कहते थे extreme right वाले zeros will be considered significant. So we'll say that there are total of 5 significant figures in this representation. And just so you know, 10 raised to the power something is never considered as significant figure. Then we have unit conversion. Unit conversion is, I would say, the very basic technique that we must know in order to solve basic physics की problems. And अभी भी नहीं, आगे के standards में भी this is the one common technique जो आपको आनी चाहिए, right? Let's just see. We know that अगर मेरे पास है 1 minute, right? I can write this 1 minute as 60 seconds as well. ठीक है. ये कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं हम वो डायरेक्टली लिख लेते हैं, राइट? मैंने क्या किया, मैंने अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया. पहले आई वाज रिप्रेजेंटिंग इट इन द यूनिट्स ऑफ मिनट और अब मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ सेकंड में, राइट? एंड इट इज ऑब्वियस कि जब भी आप यूनिट्स चेंज करते हैं, किसी एक यूनिट से दूसरे में जाते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है वो भी चेंज हो जाता है. ठीक, क्योंकि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट ही कैसे करते हैं, वी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड उसके साथ वी हैव कोई भी स्पेसिफिक यूनिट्स. हाउ डू वी कन्वर्ट यूनिट? यूनिट कन्वर्जन के लिए सिर्फ दो बातें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है. दी वेरी फर्स्ट थिंग इज किस यूनिट से किस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, राइट? एंड दी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोनों यूनिट्स के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कौन सा है. लेट्स जस्ट टेक अ रैंडम एग्जांपल, राइट? स्टार्टिंग विद दी वेरी बेसिक, मैं आपसे कहती हूँ 32.6 मिनट्स and I ask you to convert it into seconds. Right? I am asking you 32.6 minutes is equals to how many seconds? तो क्या पहला point clear है? Minutes में given है and you are to convert into second. ठीक है? Let's just do this. Your value is in minute. आपको क्या करना है? You have to convert it into seconds. ऊपर आपको seconds लेकर आना है, right? तो आप क्या करेंगे? एक तो आपको मिनट कैंसिल करना है. न्यूमरेटर से अगर मैं मिनट हटाना चाहती हूँ तो मुझे उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा. ठीक, इस मिनट से ये मिनट कैंसिल हो जाएगा और मेरा फाइनल आंसर सेकंड में आ जाएगा. एक आपने यूनिट्स डिसाइड कर ली, किसको एक्सक्लूड करना है और किसको लेकर आना है अपनी इक्वेशन में. एंड देन द सेकंड पॉइंट व्हिच आई जस्ट मेंशनड इज कन्वर्जन फैक्टर. आपको पता होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए एक सेकंड कितने मिनट्स के बराबर होता है या प्रेफरेबली एक मिनट कितने सेकंड्स के बराबर होता है.
Do we know? Yes, we do. 1 minute equals 60 seconds, right? What else you have to do is simple multiplication के steps करें. जो भी न्यूमरेटर में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दें और जो भी डिनोमिनेटर में है उनको डिनोमिनेटर में लिख दें, राइट? एंड यूनिट्स तो हमने देख लिया कैंसिल आउट होकर. We are left with this second only. Let's just put in these values in your calculator and see what would be the final answer. 32.6 multiplied with 60 gives you 1956 seconds. इसका मतलब है 32.6 minutes equals 1956 seconds. ठीक, इसी के लिए कोई एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट्स जस्ट से मुझे कोई कह रहा है 32.6 minutes में नहीं, बताएं 32.6 years में how many seconds are there, right? Nothing to be afraid of. पिछली बार हमने कहा था मिनट से सेकंड में जाना है, आपको पता होना चाहिए एक मिनट में कितने सेकंड है, एंड दैट्स इट. ठीक, इस बार वैसे तो आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने सेकंड है, लेकिन इवन इफ यू डोंट तो भी आप स्टेप वाइज चलें. लेट्स जस्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. वी हैव 32.6 years. आई डोंट नो हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 year, राइट? बट क्या मुझे ये पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? लेट्स जस्ट टेक द एवरेज वैल्यू, राइट? ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ईयर्स को हटाकर अपने फाइनल आंसर को ले जाती हूँ डेज में. फिर क्या मुझे पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? यस आई डू नो. तो डेज को हटाया एंड अपने फाइनल आंसर को आवर्स में ले जाए. फिर अभी भी मुझे तो अपना फाइनल आंसर सेकंड्स में चाहिए, राइट? इसका मतलब है अभी मजीद कन्वर्जन करनी है. क्या मुझे ये पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप मिनट्स में ले आए, या वैसे आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली सेकंड्स में भी जा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं. बट लेट्स जस्ट डू दिस स्टेप वाइज अगर कर ही रहे हैं तो, राइट? तो पहले मैं आवर्स से मिनट में चली गई एंड देन फाइनली मैंने मिनट को हटाया और ये मैं सेकंड में आ गई. अगर मैं देखना चाहती हूँ मेरा ये सीक्वेंस सही है या नहीं, जस्ट सिंप्लीफाई द यूनिट. और अगर आपके पास रिजल्ट में एक ही यूनिट बच रहा है वो भी सेकंड, तो इसका मतलब है कि स्टेप्स आपने सही लिखे. सी, this year gets cancelled with this year, these days cancelled with these days, then we have hours gets cancelled with these hours, and then these minutes gets cancelled with these minutes. The only unit we are left with is second. इसका मतलब है पहला स्टेप हो गया. हमने ये डिसाइड कर लिया कब किस यूनिट को हटाना है और किस दूसरे यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाना है टिल वी रीच द फाइनल यूनिट जो हमें चाहिए था. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना था, इट वाज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू यूनिट्स. ठीक, बिकॉज हम मैथ्स में बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं आप अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एज लॉन्ग एज यू बैलेंस योर इक्वेशन एंड यू डिवाइड विद द इक्वल नंबर. ठीक, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा अगर इधर मैं 365 लिखूंगा तो मैं यहाँ पर भी 365 लिखूंगा. नो, यू कैन नॉट. आई डिड नॉट से आप एग्जैक्टली सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. मैंने आपसे कहा आप इक्विवेलेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. और मुझे पता है 1 year इज नॉट इक्वल्स टू 1 day, इट इज इक्वल्स to 365 days, right? फिर 1 hour is equals to 1 day is not equals to 1 hour, right? 1 day equals 24 hours. इसी तरह 1 hour equals 60 minutes. इसी तरह 1 minute equals 60 seconds, right? Since we are done with this rearrangement, let's just write all the values in the numerator, multiply करके लिख देते हैं, and then denominator वालों को भी multiply करके लिख देते हैं, and then we'll see what the final answer is. We have this 32.6, then we have 365 from here, then we have another 24, 60, and then 60. How about the denominator? We have four ones being multiplied with each other. One multiplied with one leads to one. And then किसी भी value को one से divide करें does not makes any difference. Final answer to second आ रहा है. Just put in these values in your calculator. We have 32.6 into 365 into 60 and another 60 equals 1028073 seconds, right? And if they somehow ask you to write it into the standard notation, right? How do we write this number? क्योंकि इसमें कोई decimal point नहीं है, तो we'll just assume कि वो end पर है and then we'll just keep on shifting it to the left जब तक हमारे पास point से पहले वो number आ जाए which is greater than 0 and smaller than 10. All in all, we can write it as 1.0
028073600, 10 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? 10 raised to the power plus 9 seconds. ठीक। अच्छा, if they ask us के बताएं इसके अंदर कितने significant figures हैं, so how do we answer? वही जो पहले अभी हमने rules पढ़े, right? There's 1, 2, 8, 7, 3, and 6. They are known zeros, so they are significant figures. Then this 0 is sandwiched between these two known zeros, 8 and 7. So this 0 will be considered significant. When it comes to this 0, it is sandwiched between two known zeros, 1 and 2. Again, this will be considered as significant figure. How about these two zeros? उसके लिए extreme right पे जब zeros होते थे तो remember we look for if the number is decimal or integer. ठीक है, it is a decimal number. और decimal के case में we have already established that zeros at the extreme right will be considered significant. So these two will also be considered significant. We have total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 10 significant figures in this notation, right? And just so you know, 10 raised to the power anything is never considered significant. उसको हम consider नहीं करते. बस number में इसके अलावा जो भी digits होते हैं उनको देखते हैं if they are significant or not. And then we just get to the final answer. Okay. अच्छा, इसमें जितने decimal places मैंने move करवाया point को, मैंने 10 raised to the power वो place कर दिया. While solving इस तरह के कुछ questions, just keep this thing in mind. अगर already 10 raised to कोई भी positive or negative power है, तो फिर you will have to take care of it as well, right? Let me just take an example here. For suppose we have 283 10 raised to the power 2, right? और इसको मुझे standard form में लिखना है, तो मैं कहूँगी 0 नहीं है, decimal नहीं है, right? इसको end में place करते हैं number के and बाकी representation as it is रखते हैं, ठीक? Now point से पहले तो हमने agree किया था जो number है it should be greater than 0 but smaller than 10. Is this 283 smaller than 10? No, it is not. तो मुझे point को shift करवाना है. 28 is still not smaller than 10. Again, this 2 is smaller than 10. So I'll write it 2.830, 10 raised to the power what? Yes, मैंने इस digit को move करवाया है कितना? 1, 2, 2 digits move करवाया मैंने decimal point को. So I should be writing 10 raised to the power plus 2 here. But remember, we have a plus 2 already here. So we'll just take care of it as well. We'll write 2.830, 10 raised to the power 4, right? और अगर already यहाँ पर कोई power negative में होती, for suppose ये -2 होता, right? तो we would have written -2 and इस decimal point को move करवाने की वजह से +2, balance हो जाके 10 raised to the power 0 आ जाता, right? So this is how we take care of decimal move करवाने से जो 10 की power आ रही है, और अगर कोई 10 की power already मौजूद है तो वो भी. Let's just take an example. We have 42 kilowatt per hour, right? And we are asked to convert into watt per second. ठीक, तो अब मुझे दो काम करने हैं. एक तो मुझे इस किलोवाट को वाट में लेकर जाना है, और फिर मुझे डिनोमिनेटर में से इस आवर को सेकंड में लेकर जाना है. ठीक है, लेट्स जस्ट सी. वी हैव दिस किलोवाट हियर. मुझे क्या करना है? मुझे किलोवाट नहीं, मुझे सिर्फ वाट चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है? सी, मैंने किलोवाट को कैंसिल किया और मैं सिर्फ वाट लेकर आ गई. Then denominator में we have this hour here. We need to convert this hour into seconds. So denominator से जब किसी चीज को हटाना होता है तो we write the same thing in the numerator. So मैंने hour को cancel करवाया, लेकिन मुझे सिर्फ hour को cancel नहीं था करवाना, मुझे seconds को introduce भी करवाना था. तो ये मैंने denominator में लिख दिया second. Done with the placements of units. Let's just see. इस किलोवाट से this kilowatt get cancelled. इस hour से ये hour gets cancelled. मेरे final answer का unit क्या आ रहा है? Numerator में we have watt and denominator में we have second. इसका मतलब है placement unit ही सही. Second step हम क्या करते थे? Second हम conversion factors लिखते थे, ठीक है? How many watts are there in 1 kilowatt? Kilo आ गया ना, 10 raised to the power 3. Remember, 1 kilowatt equals 1000 watt. Then how many seconds are there in 1 hour? You always start with the greater unit और फिर देख लें greater unit का 1 smaller unit के कितने के बराबर है. In other words, 1 hour कितने second के बराबर है? So 1 hour equals 3600 seconds.
right? Just multiply and divide these values and get to the final answer. जो भी numerator में उसको multiply कर दें, we have 42, then we have 1000, and then we have 1 here. Denominator में we have 1 into 3600. Let's just put in these values in your calculator and get the final answer. You'll get 11.6667, right? क्योंकि we are at this, let's just see. अगर मुझसे कोई पूछे इसमें कितने significant figures हैं, so I'll say 1 2 3 4 5 6. There are 6 known zero digits, and since known zeros are considered significant, so I'll be saying कि इसमें total 6 significant figures हैं, right? और अगर कोई मुझे कहे कि आप इसे राउंड ऑफ करवाकर 3 significant figures पर ले हैं, तो मैं कहूंगी कि 7 is greater than 5. जब ये वैनिश होगा तो लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा, so this 6 becomes 7. Again the 7 is greater than 5. जब ये वैनिश होगा इससे पिछले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, this 6 becomes 7. And then again greater than 5, पिछले वाले में 1 ऐड हो जाएगा. और अगर two significant figures में लिखना होता तो क्या करते? The 7 being greater than 5 will vanish and it becomes 12. This is our final answer. We say 42 kilowatt per hour is equals to 11.6667 watt per second. I hope this makes sense. This is very important concept and I hope you've learned it. Okay, so let's just end this lecture here. In the next lecture, we will apply these concepts which we just discussed in this lecture to answer the past paper questions. Till then, Allah Hafiz.